warrior class named as Paik. A Paik mane and with others had rebelled in 1817 mane 1857 ro prior to. So 1817 ne gote kahidala rebellion heidala. Rebellion no last class or previous classes I have said you multiple times, je kono se rebellion ho, movement ho, revolution ho, whatever you say, now you need to satisfy two conditions. First one is objective condition, second one is subjective condition. Okay? So objective condition kona बुझेतली last class रे, any rebellion has to satisfy two conditions. एटा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास करछे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव. प्रीलिम्स होची ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन समस्त में समान, आंसर समस्त और समान, यू कैन नॉट चेंज द आंसर. सब्जेक्टिव रे सब्जेक्ट बदलिवो माने इंडिविजुअल आंसर जे लिखि से बदलिवो, सेम क्वेश्चन आंसर भी बदल जिवो. बुझेला? जे कोनोसी रिबेलियन पई की गोटे ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट माने एक्सप्लॉयटेशन. रिबेलियन हेची माने तमको एक्सप्लॉयटेशन कोठोटे हेची. एक्सप्लॉयटेशन की गोटे करूची, किबा ग्रुप ऑफ पीपल करछन्ती अन्य ग्रुप ऑफ पीपल रो इक्वली एक्सप्लॉयट होची सबुठे. दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी. बुझेला? एटा होची पाइक विद्रोह ब्रिटिश विरुद्ध रे होची, दस एठी एक्सप्लॉयट ब्रिटिश करूची. ताले की गोटे आसी की तार लीडरशिप नबो, सेटा होची सब्जेक्टिव कंसर्न. की गोटे आसी की कहिबो कि नाही तम ऊपर अत्याचार होची, एठी नेबे द ग्रेट बक्सी जगबंधु. बुझेला? हेंस जोड़ा का कंडीशन सैटिस्फाई हला, वेरियस कॉजेस हबो, कॉन्सिक्वेंसेस हबो, हमें एग्जाम पैटर्न स्टाइल ताकू एने पढिया. दस दैट विल लीड टू अ रिबेलियन. इट इज ऑफ 1817. सो इट इज वेरी नेचुरल कि सक्सेसफुल हेनी. हमें तो देखिया कोन पाई सक्सेसफुल हेलानी, एथुरो हमें आगु कोन माने माने सिखिलु, प्रेजेंट डे सहित हमें ताकू कंपेयर करिवा. अब देखिया एग्जाम रे क्वेश्चन केमती पढि परियो. क्लियर? Now today we'll do all these things. Now any rebellion has got some causes. Before going to the cause, let me tell you, এটা 1870 रे हबो. क्लियर? माने गोटे सी जोडे लोक लढु चंती ता माने कोन, किबा जोडे लोक कळी करचंती ता माने कोन ना जोडे आइडिया स्ट्रगल होची. जोडे लोक कळी करचंती कि लढे होची. नाउ ईरान एंड यूएस आर फाइटिंग. That means two thought processes are in a tussle. तार गोटे local manifestation or physical manifestation is the war. Hence ब्रिटिश इंडिया भीतर पसुची, ताकर थॉट प्रोसेस होची कोन ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पाई की किबा टका पाई की they can do various other things also. That can be social, that can be religious, but their final aim is economic exploitation. Clear? काहे की 1817 1803 पर ईस्ट इंडिया कंपनी बसुची. नाउ वी हैव स्टार्टेड हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी बसुची. कंपनी गोटा काम कोन ना ट्रेड एंड कॉमर्स करिया. ट्रेड एंड कॉमर्स काहे की ना प्रॉफिट. ना प्रॉफिट कोन होबे एते ना, कारण सुनिउ ठीक ना, कारण सीए इट इज द मोस्ट करप्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. सी ब्राइब करूची. ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राइब करूची. काहाको ब्राइब करूची ना ब्रिटेन पार्लियामेंट. ब्रिटेन पार्लियामेंट किए बसची ना प्राइम मिनिस्टर बसची, आउ किए ना अपोजिशन लीडर बसची, आउ किए ना स्पीकर बसची. पूरा पार्लियामेंट टू अप टू पियन जाएंगे से समस्त ब्राइब करूची. ताकू टंका दरकार है, से लूटमार करिया को आसीची. देयर एम इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन व्हाटएवर डैम माइट बी. से ता पई कि किछि भी कर परियो, से किछि करिया पई से ट्रेन आनची. सब भलो कथा होची, बड़ कथा होची, से ता पई कि एजुकेशन भी आनुची, so that से clerical post तैयारी करि परियो. So this was the thought process of the British, right? So there would be a British exploitative policies. केमिति सेटा हो, just let's come to the causes first, right? कोन करिया देख, हमें स्पेसिफिकली पाइक ताकू पढुचु. कोठी आइची ना खोरदा रे, खोरदा जोन रे तने भाबे ना ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. मेजर फ्लेचर नाटा मन रखियो, एटा क्वेश्चन पडियो. टुक ओवर द चार्ज ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. आ ब्रिटिश गोटे जागर
administration को नौची, it was not of course not for the welfare of the people, it was not for good governance. से exploitation ही करियो तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन गोटे जगार पॉलिटिकल जिनसटा को माडी बसुचु माने पॉलिटिकल जिनस को माडी बसुचु एडमिनिस्ट्रेशन तू बसुचु यू विल गेट सम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई बुझिउची? Yes, sir. Yes, sir. पॉलिटिकल एरिना को तू जदी कैप्चर करूचु तोर फाइनल एम होची इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन करिया पाएंगी you need to have a clutch on the administration. Now the way the India was getting administered according to British was archaic, hence they will go for a change in the administration. For that Major Fletcher will come into picture. Major Fletcher को दिया हुआ ना कौन in the charge of the entire administration of the state. It's a possible prelims question. और मेंस रे आनाटा लेखा हबो. क्लियर हला? मेजर फ्लेचर प्रथम ना आमे ताले मन रखले मेजर फ्लेचर. आ फ्लेचर आसी जी ताकू कुहाई जी ईस्ट इंडिया कंपनी बसची. ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे स्पेसिफिक अमाउंट ब्राइब करिया को पडुची. ताकू एतिक लुटमार करिया को पडियो एंड दैट अमाउंट वाज वेरी बिग. ता बाद रे बुझ पुन थरे जे ईस्ट इंडिया कंपनी आसी बसची से निजे ब्राइब दे की आसी. हेंस जेमिति हमर पॉलिटिकल क्लास होंतु एति टका खर्च करी से एमएलए हेची से एति टका चोरी करिवो मिनिमम एति टका ब्राइब दे की आसी छी से वाइस रॉय हो से जीए हो कलेक्टर हो से जीए हो. हेंस दायित्व दियाइची फ्लेचर को टोटल चोरी रो दायित्व दियाइची इन शॉर्ट. हेंस ना फ्लेचर हैज अ वेरी बिग बर्डन कि एति चोरी करी कि देले एतक लोक सैटिस्फाई हेबे. सो इट वाज वेरी नेचुरल कि एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज आसीओ ब्रिटिश रो and गोटे लोकर एक्सप्लोइटेशन गोटे लिमिट अछि. स्ट्रिंग रो गोटे लिमिट अछि. बेसी टाणी से छिड़ी जीवो. हेंस लोक ताको टॉलरेट करि परिबेनी. जेतले टॉलरेट करि परिबेनी दैट इज अ मूवमेंट और a rebellion or a mutiny or a revolution or a freedom struggle जेमति इंडियन माने कल. बुझला कि कोइ ची एक्सप्लोइटेटिव policies will be there which become intolerable. Hence आ गोटे कथा कहला ना ओडिसा रे आजि का डेट रे भी कोर ओडिया लोक एते डेवलपमेंट हला पर भी बेसिकली ओडिया बुझंती. तमाने पाठशाठ पढछ बोली हिंदी चैनल सब देखु थाई पार किंतु आज भी गां माने के जिबु मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस ऑफ ओडिसा आज भी न्यूज सुनुचंती ओडिया रे. राइट? ओडिया चैनल हमर एबे भी चालुची. हेंस आजिर परिस्थिति एया भाबे सेते बेले हमें बेंगल जोन भीतर थिलु. बेंगल गोटे पार्ट होतला ओडिसा. दबदबा थिला कहार ना ऑफ कोर्स बेंगली मानकर. ता माने न कि हमें आजिका डेट रे एंटी बेंगली जीवा से न. बेंगल रो दबदबा एथि पई कि थिला बंगाली कोन थरे मेंस क्वेश्चन स्टार्ट हला. यूनाइटेड बेंगल भीतर ओडिया भी तो थिले हिंदी भी तो थिले बंगाली थिले. बंगाली दबदबा बेसी काहे कि ना कोलकाता थिला. कोलकाता थिले सो व्हाट कोलकाता टा होची ट्रेड सिटी हेले सो व्हाट बुझू ठीक रे. बंगाली मानकर दबदबा बेसी काहे थिला ना सिटी कलिकता थिला. कलिकता थिले कोन ला सेउटू ना ट्रेड सिटी टा. सर आपनको वॉइस आसुनी. ऑडिबल ना? Yes, sir. केत समय हेलानी सुबह जाउ नथला? सर 5 मिनिट हबो. 5 मिनिट हेलानी आ करथुला कोन? हां 5 सर मिनिट सर. सर लास्ट कहैतले कलिकता ट्रेड सिटी थिला आ त रीजन Yes. कोड थिले?
सर कोलकाता टा बेंगलीଙ୍କର गोटे ଦବଦବା सर 50 सेकंड हम वॉइस कट थला देख कलिकता ट्रेड सिटी कहतले सेति सी हमें क्लास को आसिने स्लाइड पढ़ी के जीवा रेस्ट ऑफ द ओडिशा इंडिया रे एआई हो स्लाइड पढ़ दे जाउत वी आर लेस इंटरेस्टेड इन स्लाइड स्लाइड आउट थु आइज तो खाली बुझ कोन कहउछ एउथुरु तोर कोन हबो ना आंसर बारियो नले बसी घोसुथौ कलकत्ता डा ट्रेड सिटी हला क्वेश्चन थिला बेसिकली यूनाइटेड बंगाल रे ओडिया भी थिले बंगाली भी थिले हिंदी वाला भी थिले बंगाली दबदबा कहीं बेसी है कारण जियोग्राफिकली कलिकता थिला कलिकता को बेस बनैला ब्रिटिश ब्रिटिश कहीं बनैला ना से पोर्ट अच्छी आगु अच्छी पोर्ट ना पोर्ट थिला कहला ना ट्रेड एंड कॉमर्स हो ना ट्रेड एंड कॉमर्स तो आगु भी होउथला राइट हमर ओडिसा रे भी होउथला ब्रिटिश एटा को बनैला बेंगल ता सबुटु बड़ फर्टाइल लैंड ता प्रथम पॉइंट फर्टाइल लैंड हले कौन हबो ना एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री को से सपोर्ट करि परिबो ब्रिटेन रे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अछि एंड अदर इंडस्ट्री जे एग्रीकल्चरल बेस्ड अछि कारण आयाटा सेठी स्टार्ट हेछि तेणु करी तांकर फायदा होछि प्लेन्स रे बसिया आ मेजर प्लेन ता विथ पोर्ट मान फैसिलिटी अछि सेटा होछि बेंगल 10 कोलकाता 10 जेतु सेमाने बसचंदी तेणु करी तांको बेसी क्लर्क दरकार एंड स्टाफ दरकार तेणु करी सेठी कलिकता रे एजुकेशन हेछि जेतु एजुकेशन हेछि तेणु करी गोटे एजुकेटेड मिडिल क्लास बाहर जदि एजुकेटेड मिडिल क्लास बाहर छि ताले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बेंगल रे हेछि सेमाने ऑर्थोडॉक्स रो बाहर की साइंटिफिक हेछंती एज कंपेयर टू ओडियाज एंड अदर हिंदी पीपल इन द बेंगल जोन और रेस्ट ऑफ इंडिया thus Bengalis will become intellectuals over others possible mains question and prelims and other one liner kemti held karaba am to dekhiya now because of the dabdaba of the Bengalis now this does not make Bengalis to be villain ta mane no ki se villain he gele ta mane ei hochandi sei बंगाली लोक जे आईएनसी फॉर्म करिवे in true sense सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आनिबे बुझियोची किंतु ओडिया बही हमर एमती लेखाई छि बाय दिस कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस कि ओडिशा ओडिया वर्सेस बेंगली सेंटिमेंट गोटे दबो सो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट हेंस सो बेंगली ऑफ कोर्स इन द यूनाइटेड बंगाल जोन बेंगली विल बिकम अ डोमिनेंट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एंड ब्रिटिश आसे आगुरु जस्ट आगुरु मराठा थिला किंतु बहुत कम समय पे कि मराठा अछि मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम रे के बसछि ना मुगल्स बसछि जेतु मुगल्स मुस्लिम उल्टा बसुछि मुगल को कोर्ट रे चलछि पारसी राइट सो बेंगली एंड पारसी वेर द डोमिनेंट लैंग्वेज जेतले ब्रिटिश आसुछि भितर को ब्रिटिश आसे कि ऑल ऑफ ए नाइट इंग्लिश तो कर परिबनी दस बेंगली एंड पारसी रे से तार एडमिनिस्ट्रेशन चलेला बट ओडिया रे ओडिशा रे किबा कलिंग जोन रे ओडिया चलची जेतले से एडमिनिस्ट्रेशन गोटे नुआ लोक आसिला मेजर फ्लेचर से आसे कि एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लास्ट 1000 ईयर ताको भांगी देला निजर नुआ जिंस आनला नुआ जिंस को से कोथे लिखिला बेंगली एंड पारसी रे इट वाज वेरी नेचुरल फॉर दैट ऑफ द ओडिया पीपल दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हमें गोटे जिंस बुझी परनु हमर इंटेलेक्चुअल क्लास भी ताको बुझी परनी बुझला एंड हेंस इट वाज वेरी नेचुरल कि ताको जो ब्रिटिश क्लर्क माने थिबे पड़ला क्लर्क जो ब्रिटिश क्लर्क माने थिबे से ताको एक्सप्लॉइट करिवे हेंस से क्लरिकल पोजीशन में बसथिले बेंगलीज thus there was a sense of administrative exploitation on the very root even at the office which is non administrative office रे भी बेंगली पारसी चलला एडमिनिस्ट्रेशन में तो सप्रेशन हो ही थिला बुझला तो गोटे रिफ्ट किंतु बाहरियो का भितरे ना बेंगली वर्सेस ओडिया सब
हेन्स एटा गोटे आगु जाई कि लैंग्वेज रिफ्ट हेकि बाहरिबो 1905 बेलकू आमे मागुथुबु कि ओडिशा गोटे अलगा ओडिया स्पीकिंग स्टेट हे बुझला यस सर नहीं faulty revenue policy माने सी the moment you see revenue policy माने कौन बुझु आखि बंद करी घोषार नहीं एठी रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश आसीसी एक्सप्लोर करिया को ताकू दरकार रेवेन्यू आई होप द कैमरा पोजीशन इज राइट ठीक है तो आगे सर रेवेन्यू पॉलिसी से भारत रे एक्सप्लोर करिवो भारत होची एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी ता पई भलो भी होची कारण सेपटे तार एग्रीकल्चरल बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलची दस इंडिया रो रेवेन्यू पॉलिसी होची एग्रीकल्चर बेस्ड होची लैंड रे हबो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को जेते से मैनिपुलेट करिवो सेति की ब्रिटिश टंका पाइबो ताहले एक्सप्लोइट करिवो बेंगल जोन जे क्लास करिची मन पका इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम सेटा भी हबो जमींदारी सिस्टम रतवारी सिस्टम महलवारी सिस्टम आगु सेटा हबो ठीक ठाक हबो किंतु एइने कोन इन शॉर्ट एतिक मन रखता माने खाली मन रखिया पई कि एटा धर भारतर मानचित्र हिमालय एटा बेंगल जोन रे जमींदारी सिस्टम ओवरऑल ना सदर्न पार्ट रे रतवारी सिस्टम वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे महलवारी सिस्टम एटा गोटो एतिक महलवारी जमींदार रे बेंगल जोन रे ओडिशा ता भीतर अछि जमींदार आसीबे पर एति मन रखता बेंगल जोन रे जमींदारी सदर्न स्टेट्स रे रतवारी वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रे महलवारी जमींदार होची परमानेंट सेटलमेंट गोटे जमींदार बसिबो हेरिडेटरी कर देबे ताकू धन तू बस लूटमार करे आमे तोर फिक्स कलु फिक्स केमती ना 10 11 11 भाग रु 10 भाग ब्रिटिश रो गोटे भाग जमींदार रो से गोटे भाग रे एते पैसा वाला भाबे ब्रिटिश पाखो को ताले केते जाउथबो तोर ड्राउट हो सुखा पड़ू कि फ्लड हो कि तू मर जा कि जहा होची हेई जा एई दिन रो सनसेट आगुरु मते आसी टंका देई दउ दैट इज कॉल्ड सनसेट लॉ सूर्य एई दिन रो सूर्यास्त आगुरु आसी मते टंका देई दउ तोर बन्या हेची बात्या हेची कोन हेची आई डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट हेंस जमींदार का पाखरे किछि बाट रहलेनी सेमिता तो चोर थिले ही ता पर भी किछि बाट रहलेनी से एक्सप्लॉइट करिकि टंका काढिले आ जमींदार के विरुद्ध रे किछि हेई परिबोनी जदी तमे विद्रोह करिवो ब्रिटिश आसी तुमको सप्रेस कर दो प्लस जमींदार का पाखरे मन रखा लाठीदार्स थिले लाठी माने बाड़ी दार्स माने होल्डर्स बाड़ रे बाडेइबे लाठीदार्स थिले तंग पारे thus the peasants were suppressed they were doing in the name of giving money to the British जदी भूल रे धरटे फ्लड हे जाई चाष तो हेनी से तो दब कोन तापरे सनसेट हे गला एई दिन भीतर तू आसी टंका दे पालुनी सनसेट लॉ लागिला बुझिबे ना सनसेट लॉ लागिला जमींदार रो जमींदारी पळेला माने कोन मु धर गोटे जमींदार तू जो ब्रिटिश मु तते जाकी टंका देई पारलिनी तू कहलु कालीठू आ ये जमींदार नुह मोर जमींदारी गला ताले जो जमीटा थिला तार पुनी जमींदार की हबो ताकू ऑक्शन रे पकई दे बिडिंग रे पकेबे लोक आसी की बिड करिवे बोली देबे तार हला जिए कहबो मु बेसी टंका देबी ब्रिटिश को सी हबो नुआ जमींदार एति बुझेला यस सर सी हबो नुआ जमींदार एई ने ताहले भाबे थिंक प्रैक्टिकली ओडिसा रे गोटे जागा बुझेला खोर्दा रे गोटे जमींदार थिला चार पाखरे आ जमींदारी राइट्स नाही नुआ लोक आसी बिडिंग करछन से एरिया रो सबुटु पैसा वाला तो ए जमींदार थिला ना सी एने नाही ताले बाहर लोक आसी की बिडिंग करिवे ना जा पाखरे टंका थिबो राइट यस सर जो बाहर लोक इने आसीबो जा पाखे टंका अछि भाबे
बेंगल जोन रे ट्रेड एंड कॉमर्स होची कलिकता जोन रे कलिकताटा बंगाली मानकर एई बंगाली पाखे टंका अछि से सबडे बुलुची पूरी तो आसुची सी तेणुक खोर्धा भितर जो आसिक बिल्डिंग करके पाइब सी गोटे बंगाली पाइब बुझेला सी जो बंगाली आसिक खोर्धा भितर पाइला किंबा ओडिशा भितर पाइला से ओडिशा कल्चर वैल्यूज भितर किछि जानिनी तापर सी जाई पळौची कलिकता किंतु कौन हो जाइए ना लैंडलॉर्ड हो जाइए सी कौन हो जाइए लैंडलॉर्ड हो जाइए आब्सेंटी जमींदारी कारण सी सेठी बसुनी एठी पुराना जमींदार टाटिस बसुथिला नुआ जमींदारटा जाइए बसुची कलिकता रे आब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप और आब्सेंटी जमींदारी आब्सेंट अच्छी सी खाली आसुची रेवेन्यू कलेक्ट करिया को एटलीस्ट पुराना ओडिया जमींदारटा से बाड़ौला किंतु एटलीस्ट बुझुला कि गोटे केनालटे खोला हबो नाइ बन्याटा हेइची कारण से गाँ रे बसुची ये बसुची कलिकता रे सनसेट लॉ लागिला परे पुराना जमींदार मानकर जमींदारी पळीची नुआ जमींदार आसंती एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स सी प्रकृत रीजन किसी बुझु नांती चाष तांकु आसेनी पीजेंट्स मानकर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हेइची ताहले एई जोन रे जमींदार टा भी विक्टिम हो जाइए पीजेंट माने भी विक्टिम हो जाइए गोटे नुआ जमींदार टा बाहर मोस्टली से बस कलिकता बुझेला Yes, sir. British salt policy. See, now we are in a position to compare this with civil disobedience movement of Gandhi. किछि मात्रा में कंपेयर करि पारे कारण सेठी सॉल्ट मार्च गोटे हेइतला गांधी सॉल्ट को चूज काई करथिले बिकॉज़ सॉल्ट इज सच अ कमोडिटी व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय पुअर रिच हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट शिया सुन्नी एनीवन समस्ते तांको खाद्य रे लूण पकान राइट हेंस नाउ सी ओडिसा रो गोटे लॉन्ग कोस्ट अछि देयर इज अ लॉन्ग कोस्ट ऑफ ओडिसा आमर भाई टाइड भी आछी हम पारे पानी अछि वी कैन मेक आवर ओन सॉल्ट थ्रू आउट हिस्ट्री हमें हमर लूण बने की खाइछु बट दिस ब्रिटिश विल कम इनटू पिक्चर एंड कोन करिवे ना आमर ट्रेडिशनल राइट थिला ये बना पे सॉल्ट ताको मना कर देबे निजे हमको सॉल्ट बिकिबे तापर ओटे सॉल्ट टैक्स लगेबे हला तापर कोन लगेबे ना सॉल्ट टैक्स लगेबे ऑलरेडी हमें कहि के अछु सप्रेस दे के अछु हला क्लोज्ड इकोनॉमी भीतर गोटे ऑलरेडी आमे बसिछु हमर जिंस कोआडे किछि एक्सपोर्ट हेई पारुनी एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सेपरेशन वी हैव बिकम पॉवर्टी रिडन ओवर दैट देयर वाज अ सॉल्ट टैक्स दैट टू ऑन द बेसिक नेसेसिटी पानी आ पवन परे apart from air and water it is a salt which touches every life hence the British salt policy was माने से घा ऊपर ने कि लूण पकेला परी हे गला it was very natural हमें कोन ना cause देखुछु ना people are boiling from inside because of the faulty revenue system major Fletcher's nonsense which he was doing राजा मुकुंद देव सेकंड वाज द किंग सीता को काढ देई चंती बेंगली पार्सी रे माने एडमिनिस्ट्रेशन चलोचंती ओडिया लोक को चाकरी मिलुनी हमें समस्त स्लेव टाइप रो काम करूछु हमें लूण भी निजर बनै परनु तापरे लोक बाध्य है कि लूण जाई कि निजे मारिबे दे विल मैन्युफैक्चर देयर ओन सॉल्ट तापर ताको आसे कि ब्रिटिश धरियो राइट ताको से ब्रिटिश धरि नै कि ताको जेल रे पकेइबो आज भी कोनोसी लोक जदि जेल जीवो अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल थिंग सोशली सेटा गोटे खराब ना से लोकटा जेल जाइथला से लोकटा जेल जाइथला आज भी सोशली ताको एक्सेप्ट करा होउनी जदि कि गोटे जेल जीवो सेतेबेले भाव थिंक ऑफ दोस डेज लूण तंपर नाही लूण बनैला तमु पुलिस बाडैला ने कि जेल रे पकेइला जतल तू जेल रो बाहर की सोसाइटी को सोसाइटी हैज एक्सकम्युनिकेटेड यू right society has excommunicated you so this has become a social stigma also apart from livelihood and economic things so it has become a social stigma also now people were boiling from all the sides under that circumstances British will come up with another drama that was the new currency
system. New currency system कौन तू आज देखथबु ओडिया घर मानकरे एबे भी लक्ष्मी माँ को आगे देखिबु कौड़ी थुआ होउछ राइट किंबा तम घर जदी मान बसथिबो देखिबु कौड़ी थुआ होउछ कौड़ी कौड़ी काउरी कौड़ी थुआ होउछ कौड़ी was the chief medium of exchange in Odisha even at the time of the Marathas बुझला Afghans Mughals Maratha British empty SC बुझला so it was a kind of a not a kind of a it was the money system of us हमें गोटे specific code system को जानी चे right then British will come into picture and will introduce a new currency system that was called as sikka anywhere written over here no sikka system the same sikka which you know right I will introduce the sikka system now it's a new system हमें code रे now there are various reasons for it right now माने things are not very clear कि कोची सिल्वर नथिला सिल्वर एक्सचेंज रेट संगे सिक्का टाकू से मैच करके करथिले ब्रिटिश हला various reasons are there कि कोची कोडी मिललानी now that does not make sense कि कोची कि सिल्वर वर्ल्ड रे scarcity हे गला so there are various reasons for it right but things are not very clear why they did it various books are writing various things hence in November 1804 British introduced sikka rupee in Odisha so the common man were dealing with kaudi hence the new system that to uneducated that to Parsi Bengali re chalchi English nuwa nuwa asi Odia re ke deal karnanti nuwa currency system se mane ani ke asanti now it was not very clear and for our innocent common Odia people to co-op hence ei jinsar फायदा मारले किए ना जमींदार्स तालुकदार्स and sorry जमींदार्स peasants and तालुकदार्स felt difficulty semane difficulty face kale to pay the revenue right hence the grossly exploited by the local mahajans केरला नुआ इकोनॉमिक सिस्टम आसिले अरे फॉरगेट एते कथा तू छाड़े ये तो नुआ करेंसी नहीं कि आसी दिस दैट एंड ऑल तले प्रेजेंट डे इंडिया रे जीएसटी आसिला आई होप यू स्टिल रिमेंबर दोस डेज जीएसटी आसिला देयर वाज अ लार्ज ह्यू एंड क्राई ए है जो से है जो एमती बुझजो सेमती बुझजो ए है गला आज जाए इवन टुडे जीएसटी इज अंडर कंट्रोवर्सी द स्टेट गवर्नमेंट इज सेइंग जीएसटी जो हमर लॉस होची एबे भी तो कहूची ना माने एते सिंपलीफाइड हला पर हमें आज का डेट रे जीएसटी संभाली पालोनी सेते गोटे नुआ करेंसी सिस्टम आछंदी एस्टैब्लिश्ड काउडी टाको उठेई दोचंदी सिक्का सिस्टम आछंदी एंड हेंस इवन द जमींदार्स एंड तालुकदार्स वर विक्टिम ऑफ इट thus the local mahajans were in a position to grossly exploit and hence apart exploitation for it was very natural that the people were in a position to revolt they were simply waiting for an immediate trigger to happen clear let's repeat मुकुंद देव किंग थिले काट दिया गला मेजर फ्लेचर आसी तांको काढिला एक्सप्लोटेशन कला बेंगली पार्सी रे लैंग्वेज चलेला ओडिया लोक किछि बुझी पालेनी सनसेट लॉ लगेला जमींदार कर पळेला एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप हला लोकंकर बेसी एक्सप्लोटेशन हला जिंस कंफ्यूजन को गला ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी आनला लुण ऊपर टैक्स लगेला ए माने बाध्य कि लुण निजे मारले बहुत लोक ने कि जेल पकेला सोशल स्टिग्मा है कि कोटे से बारला getting all what I'm saying yes sir rest of the students getting what I'm saying yes sir so all these things now see माने भाबे तापरोटे नुआ करेंसी सिस्टम आन दोची नुआ ना जिंस करची तमे जाय कि ओडिया रे कहउछ से माने कि बुझु नांती बंगाली बसी कि कोठोटे here Bengalis are not villain let me tell you कारण
ओडियाटा भी ओडियार एक्सप्लोटेशन करूची बंगाली भी बंगालीर एक्सप्लोटेशन करूची इट इज द पावर पोजिशन ने किए बसुची दैट्स द होल गेम तापर कोन ना कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ खोर्धा ना कोन जस्ट आगुर कोन हिची ना जय राजगुरु को फांसी दिया कि मार दिया जाइए राजा मुकुंद देव को डिपोज करा जाइए मेजर फ्लेचर आसिकी खोर्धार एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करिछि नाउ द ग्राउंड इज बॉइलिंग फॉर अ मूवमेंट एठी किए जने लीडरशिप नवा दैट्स द होल थिंग इन लीडरशिप नवा पे गोटे इमीडिएट कॉज किंबा ट्रिगरिंग कॉज ट्रिगर बंधुक जो टाणन जेमतिया दैट इज ट्रिगरिंग कॉज कोन हिची नाउ लेट्स कम टू द hero name was Bakshi Jagabandhu. He was the commander of Raja of Khordha. Hence, gote to jinsa clear hala. He was a soldier, right? He was the commander of Raja Khordha, and his post was hereditary. पारे जागीर थिला माने ताकू मु तम को कहितली सब बेले सैलरी देई हबनी ये कमांडर थिले याकू बहुत पैच ऑफ लैंड थिला हला बाड़ी बाड़ी माने माने घर बाड़ी ताकू जेहेतु बक्सी जगबंधु को ताकू हला बक्सी बाड़ी कोन थिला किला ऑफ रोरुंग खोर्धारे किला ऑफ रोरुंग एंड चारटा परगणा थिला ना मन रखा को पड़ियो किला ऑफ रोरुंग तांको जागीर रे कोन थिला किला ऑफ रोरुंग आउ चारटा परगणा कोन रोरुंग लेम्बाई साराई 24 कुद रोरुंग लेम्बाई साराई एंड 24 कुद ए चारटा थिला आगर थिला बक्सीबाड़ी एने जते बेले किंग मुकुंद देव को ही काट देइचंती एंड मेजर फ्लेचर तार निजर काम चलेइची से नुवा एडमिनिस्ट्रेशन करूची से बक्सी जगबंधु कहूची ना बक्सी जगबंधु वाज अ वेरी रेस्पेक्टेड मैन एंड अ वेरी ग्रेट मैन दस से बक्सी जगबंधु को डिसमिस कर दूची कोठू ना किला रोरुंग बोला भाई आ तुम पारे एटा नहीं आ चारटा परगना या पछरे भी गोटे स्टोरी अछि हला देयर वाज अ स्कैम लेड स्टोरी इन दिस सो आई एम as of now I am living it चारटा परगना बिक्री कर देला का को माने माने धोखा देगी का को ना लक्ष्मी नारायण I repeat we are here in that of the immediate cause or the triggering cause in a leadership नेबे बक्सी जगबंधु से खोर्धा राजा कमांडर थिले एटा हेरिडेटरी थिला ताकरी पाखरे किला रोरुंग आ चारटा परगणा थिला सेतिकी थिला से किला रोरुंग ताऊ काढी दिया गला आ तांको धोखा देकी बुले बांकी की चारटा परगणा बिकी दिया गला लक्ष्मी नारायण thus now the great Bakshi Jagabandhu does not have any land left with him land was the wealth now leadership nabo now that man is all set to take up the leadership मास थिला चिड़ी की बसिची तांग गोटे नेता दरकार लीडरशिप नबाकू से नेता मिली गले किए ना द ग्रेट बक्सी जगबंधु now the movement will start in 29th March मन रखी वाला 29th March 1817 1817 57 पूर्वरु एटा now this question will be continuously asked because Prime Minister Modi has mentioned this multiple times. So it is in current affairs from a very last two to 3 years. Dipini Vasalan eta current affair re rahuch. So we are taking this topic in a very detailed way. 29th March 1817, the Paik Rebellion start habo. मन रखा आगु थिबो जे 400 लोक आसीबे dominated by cons of घुमसार होची गंजाम रे अछि लिखा अछि on 29th March 1817 रे पाइक रिबेलियन स्टार्ट होबो रिबेल करछन पाइक माने सो इट इज नॉट नेसेसरीली ओनली पाइकर्स बुझला या पर क्वेश्चन होबो प्रीलिम्स से नॉट नेसेसरीली ओनली पाइकर्स rather on 29th March 1817 400 लोक 400 is a big number a group of 400 men dominated by cons of घुमसार in गंजाम माने ट्राइबल भी थिले not only paikers peasants भी थिले other social elements भी थिले so it was not just a Paik rebellion it was led by the Paikers no doubt in it Paikers are the soldier class or that of the warrior class of Odisha ए पाइक माने थिले बल्ली रादर पाइक माने अछंती बल्ली आजिका डेट रे ओडिया कल्चर अछि
किंबा ओडिया अस्मिता बेसिस रे जो बीजेपी गवर्नमेंट आज बसीची तार गोटे मुख्य कारण होउचंदी पाइक कारण ये कल्चर टाको बंचे ओडिया कल्चर सभ्यता आज का डेट रे किए बंचेची बहुत अन्य फैक्टर अच्छी मानिली बट वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूशन होउचंदी पाइकर्स लेट इट बी अफगान्स और मुगल्स or British or damn anyone, it was a never easy task to fight Paikers. तांको टेरेन भितरे पसिकी they are the best in guerrilla war. से नुची केतले क्वाडे मारी की जीवे no one knows, even God does do not know getting. Hence ओडिया अस्मिता कल्चर जहाँ भी आज का डेट रे आमे देखुचु मोर प्यूरिफाइड फॉर्म रे अच्छी वेस्टर्न ओडिसा रे ईस्टर्न भी अच्छी most pure form of Odia culture the कोठी अछि then it is of course western Odisha and thanks to this great people the Paiks of Odisha ए पाइकଙ୍କ विषय जदि कि आगुरु कथा आइछि then it was also चाणक्य बुझु तो we are that old people ताले it was not just a Paik rebellion it was not just a Sepoy mutiny ततरे के थले ना cons of the Gumsar of in Ganjam माने so it was not only limited to the Khordha district rather it has माने go as left to that of the Ganjam तापर कटक रे हो हला तापर से पुरी रे भी पसिबे so it was a big landmass under this of the Paik rebellion entered the district of Cuttack and they were joined by in a Punthamanaki Paiks and Dala Behra of Khordha एटा बहुत पचरे Konda of Ganjam, Gumsar, Dalawehra of Khordha, under the guidance of a person named the great Bakshi Jagabandhu. So it was not just a Paik rebellion. So other elements, tribe bhi achanti, peasants bhi achanti, other social elements like that of the Dalawehra, eman bhi achanti. Ajika date re Khordha re Dalawehra aji bhi achanti. And it is a very recent story. Yeah, and hence rebellion has got started. Of course they will attack the police station एटा तो हवई हबो कारण ए माने आसी कि प्रथम रे विरोध करिवे ना पुलिस संगे कंट्रोल तो हबो बाडे बेटा तो हबो गोटे rebellion थांदा से अटैक करले पुलिस स्टेशन को गवर्नमेंट बिल्डिंग को इट्स आर वेरी नेचुरल शहर बेसी लोक मार देले लूटेड द गवर्नमेंट मनी अराउंड 15000 बुझला they attacked Charles Becher the salt agent of the southern division and plundered his boat on Chilika now you are very clear Charles Becher a salt agent and now I do not need to explain why salt agent मानो से the salt tax लगे जदी salt ऊपर नकर राग अछि कोन करी चार्ल्स बेचर नाटा को टिके मन रखे पड़ियो एतो बने हमें कोन ना देखछे लेट्स रिपीट फर्स्ट इज मेजर फ्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करथिला सेही मुकुंद देव किंग से ताको काढिथिला बुझला तापरे हम कोन देखले द ग्रेट नेम व्हिच ऑफ कोर्स वी नो बक्सी जगबंधु एटा हमने आगु जानिचु मन रखिया सेतरे किछि नाही एथरे पाइक थिले कंद ऑफ गंजाम थिले एंड दला बेहरा थिले हमें आउ गोटे नाने जानलु चार्ल्स बेचर दैट्स इट मेजर फ्लेचर मेन लोकटा तबे चार्ल्स बेचर सॉल्ट एजेंट थिला तार बोट को भी अटैक है कि सॉल्ट तक नहीं आएगा now I do not need to explain why salt and तापर से टैक्स लगे छन आउ गोटे ना बहुत दरकार एडवर्ड एमपी कटक मैजिस्ट्रेट थी वाला गेटिंग एडवर्ड एमपी एंड जेतु इन स्टार्ट हो जाई सी एथरे किछि ना आसीबो मु लेखिछि काले जदी टिके से डेप्थ को जीवो ताले सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेफ्टिनेंट प्रिडवे एटा अछि प्रिडवे नॉट प्रिडवेक्स प्रिडवे एंड फेरिस जे खास दरकार नहीं हेले भी पढी के मन लगता कारण तो पाके एनी टाइम अछि एडवर्ड एमपी इम्पेसियो दिस नेम इज नीडेड राइट एनाटा मन रखा पड़िबो इंसर्जेंट्स तापर सी तकु दमन करिया पई बाहरिबो and hence he will dispatch troops to Khordha and Pipili under Lieutenant Pridwe and Ferris. केरला ना ते दरकार नहीं खाली जाना था एडवर्ड एमपी तापर से ट्रूप्स डिस्पैच करिवो हम संग तापर गंडोल हबो as usual this is a normal story Indian सब बेले स्टार्टिंग रु जितंत
because we are the best fighter class. Uncomparable fighter class are the Indians. I hope we have dealt with the कौन पे हमें हारू. Now I'll say you why we'll lose. तमें starting रू जितिले मुकुंद देव second को मन पड़ुची was disposed of by Major Fletcher. Now मुकुंद देव को हमें कहलु कौन ना से हमर king. Clear? कोड successful हला खोरदा लेम्बाई पिपिली गंगपड़ा हरिहरपुर the insurgents separate जितिले मुकुंद देव को कहला कि से हमर king बोली. This much is clear? Yes. Yes, sir. Now new tactics. Now this much detail is not needed. This is for OPSC. This detail. If you are for any other exam, ताले नागरा टिके पढ़े पड़ियो. Yeah. किसी ने very now देख माने starting रे हमें जितिलु. तापरे ब्रिटिश तारा पावर बढ़ी दो. ये तो बढ़ी दव आमे तापरे दबिजु आमे हारिबु. एटा कोन पई कि हुए हमर एथि पई कि हुए बुझुबा. एने ब्रिटिश तारा पावर बढ़ेइबो आमे आगु को हारिबु. आमे काहे कि हारिबु बुझ. आमे तो जिति जिति गलु. ब्रिटेन जो आसी बसिची ईस्ट इंडिया कंपनी जो बसची से माने क्लियर अछन. ताकर विजन क्लियर. ताकर विजन होची भाई चोरी करिया. Things are clear for them. ताकर को फ्लैग उड़ीबो ना ब्रिटिश फ्लैग उड़ीबो. आमर कोन आमे एठी लढीबु. लढी कि जीति साला पर कोन आमे जानिनु. ए माने जानि चंती आमे लढीबु. लढी कि जीति साला पर जति टका खर्च होला आमे सेति कि तांको लूट मार करी कि नबु. वार इंडेमनिटीज तांको ऊपर आमे पकेइबु. आमे तांको ट्रीटी साइन करेइबु. करे कि तांकर एग्रीकल्चर फेग्रीकल्चर सब माडी बसु. जति टका हमर खर्च होइछ आमे सेति कि आदाय करिबु. आ वार रे व्हाइट माने मरु नहंती. वार रे से आमरी मानको तांकर आर्मी रे पुरै कि आमरी संगरे लढौचंती. तांकर खाली एबे पई कि टका खर्च होउची ब्रिटिश रो. से वार जीति गला परे से हमट लूट मार करी कि नै जिवे. तांकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा क्लियर अछि. ता बाद रे ब्रिटेन रे किंबा यूरोप रे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हला. यूरोप रे ब्रिटेन रे व्हाइट रेस सुपीरियरिटी चली. व्हाइट माने ही सुपीरियर. आमे ब्लैक तणु करी ब्लैक ता हम विरुद्ध रे लड़ी की जीति परिबनी. से ता पई कि जीवन देई परिबे. तणु कि जीवन दे दो चंता पर इफेक्टिव लीडरशिप रहउची. एइथि पई कि हमर भी रहउची. किंतु गोटे जागा जीति गला पर कोन धर पूरा जीति गलु ता पर कोन ता पर कोन सेई ओल्ड फॉर्म ऑफ किंगहुड को जीवा ना डेमोक्रेसी की जीवा ना नुआ फॉर्म ऑफ वारफेयर को जीवा. किछि जिंस नाही हम पाखरे स्टेप अहेड र नाही. 10 नेशन एज ए होल रो कांसेप्ट बिता नाही. 10 नेशनलिज्म इन दैट सेंस लैक करूच. एमाने ब्रिटिश माने निजर फ्लैग पई कि मरि जाई परिवे. एफिशिएंट लीडरशिप अछि. तांक पाखरे टेक्नोलॉजी अछि. तांक पाखरे माने आर्म्स अछि. कोन सोफिस्टिकेटेड. हम पाखरे ओल्ड स्टाइल रो. तांक पाखरे स्टेप अहेड अछि. हम पाखरे स्टेप अहेड नाही. हेंस हमें भलो वारियर क्लास हेइथिला परे भी से हमकु यूज करी कि हमकु हरई देबे. हम लोगों को ब्राइब कर देबे. हम भितर गद्दार बाहरीबे. काहे कि नेशन स्टेट रो कांसेप्ट नाही. बुझला. Yes, sir. Consequences of the Paik Rebellion. Very easy. गोटे रिबेलियन हला. हमें मुकुंद देव को कहलु किंग पुन थरे. मुकुंद देव हैज टू सरेंडर बाय 1825. रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गला. 1825 रे ईस्ट इंडिया कंपनी बसची. एने क्राउन तो आसीनी. क्राउन आसीनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी बसिची. ईस्ट इंडिया कंपनी सेपटे आहुरी भी तो लडुची मराठा को संगे. सी बहुत लडुची ने कोन ईस्ट इंडिया कंपनी कोठी बुझ कोठी ना पूरा देश जाकरे. जदि से लडुची तार मनी एक्सपेंडिचर होउची. किंतु ताको ब्रिटिश पठेइची ईस्ट इंडिया कंपनी को मनी चोरी करिया.
तू चोरी करिया जगह जाके खर्च करछु लड़ाई करी करी हेंस तेणुक तू देखु 1813 एक्ट 1833 एक्ट ये एक्ट करा आसुच 53 एक्ट ये एक्ट करा आसुच कहीं सब एक्ट तू देखु ईस्ट इंडिया कंपनी पावर कमुच देखियो ये जो लड़ुनी एते लड़े की टंका खर्च होउची सेपटे ब्राइब करि परनी किबा ब्रिटेन को देई परनी तेणुक से एक्ट पास करी पार्लियामेंट तार पावर कमुच हेंस एने ब्रिटिश देखला कौन अरे हे एठी गोटे गंडोल हो गला ना एठी गोटे रिबेलियन हो गला ना कौन करिया ताले ना ओडिया लोक माने रिबेल कले ना काहेकि ना पारसी यूज कर दोचो बंगाली यूज कर दोचो ओडिया लोक मान को काम रे किछि रखनो से माने लेफ्ट आउट फील करछन ताले कोन करिया ना ओडिया मानु को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दियो फर्स्ट consequences of the Paik Rebellion was ओडिया मानु को सरकारी चाकरी भितर काम मिलिला right thus local people will come closer to that of the British authority through their employees first one बुझेला Yes, sir. let's come to the judicial procedure see बुझियो पुन थरे इने वर्ल्ड रे जे कोनोसी भी रिबेलियन हो जोठी भी जा हो समस्त डिमांड होची जस्टिस अन्याय हेची बल्ली विद्रोह हेची से अन्यायटा किछि देई परियो तेणु कि तुमको कौन दरकार ना जस्टिस दरकार जस्टिसटा हेई पारलानी ब्रिटिश कहला चल ठीक अछि ना कौन करिया ना डिस्ट्रिक्ट मानकर इंटेरियर विलेज गाँ भितर को ना कौन ना जज निजे जीव जज जो आगो कोर्ट रे बसला गला ना 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 सेमथि हेले लोक माने रिवोल्ट कर दोछन एने से पैसिफाई करछि मासेस को ओडिया मासेस कहला तुमको चाकरी दिया हबो आ कोन अमलाज एंड अदर्स visit the interior villages of the district accompanied by amlas and receiving petition माने से गाँ भीतर को जीव भीतर जाई कि तुमको जस्टिस दे के आसियो तुमको न्याय दे के आसियो तुम अगर अन्याय हबा पई कि दबनी इट वाज अ मेजर चेंज इन दैट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीजर कारण रिबेलियन रो मुख्य कारण कोन ना जस्टिस एपट सेपट हवा हेंस ब्रिटिश कौन कहबो ना मु लोक पठे गाँ भीतर जाके तुमको जस्टिस दे के आसी जला रिडक्शन इन सॉल्ट प्राइस आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस लुण ऊपर तुम टैक्स लगेइथिलो आमे जदि लुण मादुथला मु नेकी जेल पकोथला सोशल स्टिग्मा होतला बाडौथला सेति पई तो रिवोल्यूशन ता हला हेंस से प्राइस रे रिड्यूस कला हला एंड मोर सॉल्ट वाज अवेलेबल फॉर द स्मूथ परचेस ऑफ द पीपल हियर दस पीपल आर पैसिफाइड ओडिसा रे आगुरु थिला आजि भी आगु को भी रहिबो ओडिसा इज कॉल्ड जगन्नाथ कल्चर बुझला मु तुम कोन कहितली गंजाम आसिले कटक रे पसिले खोर्धा अराउंड रे रिबेलियन हला तापर से पुरी आडी जिवे हला एई पॉइंट टाको मन रखिथा पुरी टेंपल क्वेश्चन पचारे को रिलीजियस स्ट्रक्चर पाखरे रो सिग्निफिकेंस कोन थिला माने को रिलीजियस स्ट्रक्चर पाखरे रिबेलियन टा हितला दि चारटा मंदिर ना देइथो तार आंसर हबो जगन्नाथ टेंपल तार से पुरी गले मुकुंद देव को डिस्पोज ऑफ हेतला नाउ किंग इज अ सेंटिमेंट तो द किंग को काढी दोचु दैट इन दोज ऑर्थोडॉक्स क्लास और सोसाइटी ही इज अ सेंटिमेंट इवन आज भी पुरी रे किंग होचन सेंटिमेंट पुरी जेता बेले पुरी रे रथ यात्रा रे एबे भी छेरा पहरा करे माने रथ को ओळिया पई थले किंग जिवे तुम देखिबो किंग एठी जाउचंदी साइड रे सब लोक ठिया की हाथ जोड़ी के ठिया हिथिबे ना कोन ना राजा जाउचंदी पुरी रे राजा किए लक्ष्मी मां कर बापा is the father of mother Lakshmi hence father-in-law of Lord Jagannath normal sense re king hochi shadow of God hence a very respected figure within the society thus eso jinso ko British dekhila right raja मुकुंद देव 30 नवंबर रे डाइड ऑन 13 नवंबर ना 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 एटा बोधे भूल अछि जस्ट नीड टू क्रॉस चेक
आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू क्रॉस चेक। हाँ किंतु या रामचंद्र देव वाज अलाउड टू मूव टू पुरी, तांको पुओ रामचंद्र देव ताकू कौन करे ना पुरी पठे दिया जीवो, से पुरी रो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को देखिया पई से कहबो हला आ ताकू समिति तांका ता किछि नाही, ताकू ब्रिटिश कहबो सर देखंतु हमें तो आपन को 24000 टका वर्ष को दबु, सेते बेले माने मास को 2000 बुझौची, इट्स अ बिग अमाउंट at least of those days, but king has become a nominal power now. Now एथरे को हबो ना religious sentiment of the Odia people will get pacified. Now British is pacifying Indians or Odia people from all the sides. कौन कला administrative changes अनला, ओडिया मान को चाकरी देला, गां भीतर पसी कि तुमको जस्टिस देला, सॉल्ट रो प्राइस कमेला, राजा मुकुंद देवंकर पुओ ना होची रामचंद्र देव, रामचंद्र देव को कौन कला ना पुन थरे पुरी रो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रे बसैला, वर्ष को 24000 टका देला, मास को 2000 टका देला, रिलीजियस सेंटिमेंट को भी से पैसिफाई कला। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्रिटिश, आई एम नॉट प्रेजिंग, वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, राइट। आउ कोन आउ की कथला ना जमींदार माने उत्पाद हेतिले काहे कि ना सनसेट लॉ लगे कि ताकर पड़ीतला कोन ना पावर पोजीशन से ताकू रिस्टोर करियो को जगह रे बहुत जगह रे, एंड हेंस नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दो। thus all the causes for which the rebellion has started, the British tried to pacify, but that does not mean they were willing to have good governance. तामाने भी से नथिला, they were in the same sense to exploit. They just want to pacify you as of now. Once काहे कि ना गोटे rebellion start हुआ पे बुझिबु एइने तुमको पैसिफाई कर देला, ता परे गोटे rebellion start करिया पे कि तते ऑब्जेक्टिव कंडीशन सब्जेक्टिव कंडीशन क्लास सेटिंग रूम कहितली कि गोटे नेता हबो सबुठे एक्सपेक्टेशन होउथिबो कि गोटे जे कि खबर दबो, पूरा सिस्टम क्रिएट करिया को आहुरी 10-15 वर्ष लागियो, बुझला एइने पैसिफाई कर दियो। क्लियर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तेणु करी देखबू मॉडर्न हिस्ट्री क्लास रे क्विट इंडिया सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो लगभग 10 वर्ष पर हबो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तार लगभग 10 वर्ष पर आरो न 10 वर्ष पर हबो क्विट इंडिया मूवमेंट। गोटे मूवमेंट पर आ गोटे मूवमेंट नबा को गांधी को एते समय लागुछ, गुडा जिंस चेंज होची भीतर, कारण ऑब्जेक्टिव कंडीशन सब्जेक्ट कंडीशन बनेले ही रिवोल्यूशन ता होची, नाउ से होनी। नाउ यू आर गेटिंग इन बुझी पारथबु, धर इंडिपेंडेंट इंडिया रे एबे गोटे रायट से गला किंबा गोटे क्राइम हे गला, लोक रोड को पळे आसिले, जस्टिस इमीडिएट से माने मागुचंत, परी केस हला, मेहर केस हला, ओडिसा रे लोक रोड को पळे आसिले, जस्टिस मागुचंती, गवर्नमेंट जस्टिस न दे कि कोन करिवो देखिवो, सब बेले गोटे कमिटी बनैयो, कहबा हम गोटे कमिटी बनैलो, सी जे कि सुपरवाइज करिवो, सुपरवाइज करी कि हमको रिपोर्ट दबो, हम रिपोर्ट अनुसार काम करिवो। तले कोन हबो जो मास्ट आसी कि रोड रे उत्पात होउची किबा ठिया आइची किबा जस्टिस मागुची किबा रिवोल्ट करूची, सी ता घर को पळेबो, आ थरे घर को पड़ला परे आउ गोटे सिमिलर इंसिडेंट हबो, सेति कि ह्यू एंड क्राई हबो, सेति कि मास मूवमेंट हबो, गोटे लीडरशिप ता परे आसी कि लोक रोड ठिया नले ठिया हो नांती। ए कमिटी बने ड्रामाटा भारत सरकार हो कि ओडिशा सरकार को जो अछि सेटा हमें सिखि चुकाट ना ब्रिटिश, गेटिंग? बुझुची? Yes, sir. कंक्लूजन में कोन ना पाइक रिबेलियन ओपन द आईज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ सी 2 मेंबर कमिटी गोटे बनैबे, तुम कौन कही कमिटी बनैबे, ए कमिटीटा किंतु काई बनाइछि ना देखिया पाई कि कौन पाई कि रिबेलियन टा हला हला, तब से कहबो माल एडमिनिस्ट्रेशन हेतला, जस्टिस मिल नथला, लुनो द causes which you have read, because of those causes rebellion has happened.
बुझला? Before going Yes, somewhere, we'll see few questions on it. First, we'll deal with the one-liner questions. Then we'll go for multi-liner questions. Easy. माने इथरा किछि नाही, बहुत सहज. Too easy. The Paik Rebellion took place in माने तुमको 100 थर कहलेनी ए ऊपर भी लिखा है 1817 1817 हला. और मोदी बारंबार कही कि जाइछि, just read it time and again. The notes will be given to you. Paik Rebellion occurred in present day. It's a too easy question. At least जगन्नाथ तक लिखा थिला से स्टेट ना लिख दीछ. एटा जदी भूल हबो then we cannot do anything. Leader of Paik Rebellion was Bakshi Jagabandhu. Again, super easy question. Bakshi Jagabandhu held the title of a Bakshi Jagabandhu commander थिले हला कहार ना किंग रो असी कोन हेथिबे मिलिटरी कमांडर. इजी. ही वाज तांका पाखरे जमी थिला. मु तुम कोन कहिथिली सोल्जर क्लास मान को जमी दिया हुए काहे कि ना सेमा सत्र से ऑन करिवे काहे कि ना किंग सबले टका देई परिबनी ता एक्सचेकर ऊपर प्रेशर पड़ियो एंड हेक्टिक हे जो एंड क्लमजी हे जो. तो पाइकर्स वेयर soldiers. Easy. The Paik Rebellion started from Khorda. Khorda. The rebellion was against Mughals, Marathas, British, Portuguese. ये तो नहीं मुगल था नहीं मराठा था नहीं है पहले British was a British. Khorda kingdom was annexed by British in 1803. मतलब कौन कोई थी 1803 रे से अनेक्स करथियो तक 1817 रे rebellion हला ताले केते वर्ष हला ना 14 वर्ष हला. एटा गोटे पॉसिबल क्वेश्चन पचारे बहुत स्टेट पीस रे भी एटा पचार दो. Paikos were traditionally associated with trade, agriculture, military service, administration. Like Paiko para military service. Paikos were granted land known as Paiko मान को land दिए चला. तो लैंड कहीं दिया ना कारण तक गवर्नमेंट किंबा किंग का सैलरी दउनी. इट हैज टू बी रेंट फ्री, right? It has to be rent free. It is rent free land. British abolished Paikos privilege related to land कारण तापर लैंड ही मिलछि तांको. वार टाइम में से वार करूची, पीस टाइम रे लैंड रे चाष करूची किंबा से लैंड तार व्हाटएवर ही डू, राइट? हेंस लैंड राइट्स तार जदी माने नै जू ताले से रिवोल्ट करिवो. दैट इज कॉल्ड एज Paik Rebellion. Getting? बुझुची? yes, sir. एका तुई बुझछु. बक्सी जगबंधु बिलोंग टू मयूरभंज, किलारोरुंग, तालचेर, ढेंकानाल. आमे डायरेक्ट पढ़ी के आसले संगे संग किला ऑफ रोरुंग एंड चारटा मान ए परगना थिला, राइट? किलारोरुंग. Paik Rebellion is also known as सिपाही म्यूटिनी. आमे जानछु 1857 ट्राइबल वार खन्स ऑफ गुमसार थिले किंतु एका समान नथिले. संथलटा तो बेंगल ले छाड़ दे खोरदा रे हेछि. खोरदा रे बोल. गेटिंग? सिपाही म्यूटिनी 1857 एटा नो ट्राइब्स थिले किंतु खाली ट्राइब नथिले. ट्राइबल वार नो संथलटा तो एठी नाही खोरदा रे हेछि. बस खोरदा रे बोल दो. Which temple asla? Which temple played an important role in the rebellion? मु तुम कौन कहली एंड को उठी जिवे ना पूरी जिवे जगन्नाथ मंदिर को ना कहीं कि नाम रहउछ जगन्नाथ कल्चर ता बुझला. मुकुंद देवंकर पुओ रामचंद्र देव को तापर किंग बने बसैबे तो कौन देखिया पे ना टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन देखिया पे कौन हबो ना रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द ओडियास विल गेट क्लासिफाइड. चक्की खुंटिया. अच्छा, चक्की खुंटिया एसोसिएटेड देखसु. चक्की खुंटिया जे जानि न से पूरी मंदिर जने सेवायत थिले ला. You should be knowing this. जदि के जानना, he was a sebayat, he was a servitor of Lord Jagannath, hence was associated with religious mobilization. Paik Rebellion spread to Bengal. तो
ओडिशा भितर रही पंजाब तो सीन नहीं दिल्ली तो को दूर दूर जाए नहीं पुरी पुरी जगन्नाथ टेम्पल आड़े आसला एटा को तुमको मन रखा पड़े व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिबेलियन एटा को आमे एने नहीं नेला तेणुक जो जिनस क्लास रे मिस हो कि बही रू मिस हो कौथु पढ़ू आम आम एमसीक्यू रू पढ़ू एमसीक्यू रू पढ़ी मन रखी व्हिच ऑफिस ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिबेलियन कर्नल हारकोट जी बुझा कथा क्लास रे बुझाई गला जहाँ बड़ो बी प्रैक्टिकल एमसीक्यू रू तुम मन रखियो पाइक रिबेलियन occurred during the tenure of Hastings कर्जन तो नुह बेलहाउसी तो नुह वेलेस्ली हास्टिंग एटा होचे हास्टिंग पाइक रिबेलियन was mainly at was mainly a the Paik rebellion was mainly a religious movement ना नुह military uprising हे पारिबो किंतु रहा peasant revolt खाली peasant नुह खाली military भी नुह combined peasant military revolt ना बुझला दल बेहरा थिले peasants थिले soldiers थिले पाइक तो थिले cons थिले hence combined peasant military revolt एटा immediate cause of rebellion was immediate cause इन कौन कहते तुमको high taxes one of the cause immediate cause नो तले हबनी religious interference गोटे cause हे पारिबो किंतु immediate cause नो trade restriction सेमति किछि नो annexation of खोर्दा ए चारटा भितरु this was the immediate cause right किंबा जदि बक्सी जगबंधु कर ना क्लिक थांता तले annexation of खोर्दा हेछि बक्सी जगबंधु would have the more appropriate यांकर जो बक्सीबाड़ी राइट थिला ताकू छड़े नहीं गले ये रिवोल्ट कर देले यांको पछरे लोक संदे आसिले जदि ए जोड़ा भितर थांदा देन बक्सी जगबंधु कर लैंड एज जो नेगले सेटा ही थांदा ओवरऑल कोटा ठीक हबो ना annexation of खोर्दा getting what I'm saying बुझला Yes, sir. Paik rebellion is considered one of the earliest revolt against British rule in Odisha. Mughal thabani Maratha thabani kana setebulu to au nahanti eto ya bhitar tene French pasini tale British rule rebellion aimed to restore kaku na the Khorda king Mughal habani Maratha habani British habani Khorda king or Khorda rock revolt easy Paiks lost their due to Paik होची हमरो सोल्जर क्लास कोन करथला याक पर कोन थला लैंड थिला लैंड राइट्स को नहीं गला से ताकर सिग्निफिकेंस लूज कर देले रिबेलियन कले को इंडस्ट्रियलाइजेशन नुह ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज एटा ही परिबो रिलीजियस रिफॉर्म नुह ट्रेड डिक्लाइन नुह तले ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज rebellion took place after how many years of the British occupation of Odisha British occupy करथला समझ जानछु 1803 रे एटा हला 1817 रे माइनस कले 14 वर्ष हला 14 टी 14 years Paik rebellion was suppressed by केमी सप्रेस करले मिलिटरी फोर्स लगेगी किछि डिप्लोमेसी हेछि नेगोशिएशन हेछि टीटीपीटी किसी साइन नहीं तो डायरेक्ट आसी कौन कले मिलिटरी फोर्स यूज कले मु तुमको इने कहूतली मैं स्टार्टिंग रु जितला पर भी कौन पे हारू नॉट बिकॉज वी आर बैड एट वॉर बट बिकॉज वी डू नॉट हैव द आइडिया और थॉट ऑफ स्टेप अहेड जीती गला पर कौन एतिकी लड़ी देली ता पर कौन मु खाली आसीन लड़िया पे नेशन स्टेट रो कांसेप्ट नहीं मो पाखरे नेशन एज ए होल रो नेशनलिज्म कांसेप्ट आसीबो केमिति बुझियोची और जो किंग पे की नॉट हियर मेनी केसेस रे जो किंग पे की मु लड़ूची सो कॉल्ड सी तो निजे एक्सप्लोटेटिव ना नॉट इन दिस केस अदर केसेस तनो करी फुल हार्टेड फाइट ता होउनी Paiks were hereditary soldiers priest तो न भाई
पाइक ओडिया छुआ तमे यू शुड बी एटा भूल करिबो नुह माने भूल करिया तम पर स्कोप भी नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज अफेक्टेड बाय द रिबेलियन बनपुर हबो गंजाम हबो जोड़ा को कोन हेई सलानी खोर्धा हबो ऑल ऑफ देबो बुझला गंजाम तो थिला ही खोर्धार तो फाइट था बनपुर तो थिला ऑल ऑफ देबो पाइक रिबेलियन वाज मेनली रूरल इन नेचर से क्वेश्चन ही कहि दउची रूरल इन नेचर हला बिकॉज इट स्टार्टेड इन सिटीज अरे तू जदी भी जाननु एटा को आखि बंद करी काटी कारण ये कहिची रूरल बोली इट वाज अर्बन सेंटर्ड ए और डी तक कटि गला माने रूरल इन नेचर इट वाज लेड बाय ट्रेडर्स ट्रेडर गां रे भी थांती बेसिकली सिटीज थांती देखिए बीटा इट इन्वॉल्व विलेजेस एंड peasants रूरल इन नेचर एक तमे बीटा आंसर बोली जानिचे जदी भी लॉजिक लगौचे इट इन्वॉल्व विलेजेस एंड peasants and it was led by traders b और c भितर मोर लॉजिकल होची b 10 b विल बी द आंसर सेमिति भी ट्रेडर्स माने सिटी रे बसंती माने विलेज भी ट्रेडर थांती बट मोस्टली सिटी रे बसंती एठी ट्रेडर को होची का को ना ब्रिटिश को एंड ब्रिटिश को सपोर्ट कला वाला लोक बुझियो जी Yes, sir. बाक्षी जगबंधु सरेंडर्ड इन 1825 मुकुंद देवंकर टिके तमे करिवो क्रॉस चेक हला मत जहां मन पड़छि जेटा स्लाइड लिखा छी से ठीक थिला नॉट वेरी श्योर जस्ट क्रॉस चेक इट बोधे 1817 सेटा हबो पाइक रिबेलियन इज इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज इट एंडेड ब्रिटिश रूल ना ब्रिटिश रूल तो एंड हो जाए कि 1947 एटा नो इट वाज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 एट द 17 बीटा भी हबनी इट वाज एन अर्ली एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग इन इंडिया पॉसिबली यस देखिए नेक्स्ट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी ना नो डेमोक्रेसी आसो 1947 देन सी विल बी द आंसर अच्छा भाई ओसीएस क्वेश्चन ठीक है देखिए खुशी हवा which of the following statement regarding Pahari in Paik militia correct एटा टिके आसले हमें डिटेल को पाइक मिलिशिया रे तीनटा रैंक थाए गोटे थाए पहरी पहरी माने होची सोर्ड्समैन जे खंडा धरी वाला आ गोटे होची माने बाण मारिया बाणोस माने आई होप तुम देखथिबो आई विल शो यू व्हाट इज मैच लॉक हा गोटे बंधुक टाइप रो थिबो ता भीतर बारूद पुरौथिबे निया लगले से फाटिबो तुम जदी जानि न मु तुम देखौची एमे मैच लॉक hopefully you can see my screen right Yes, sir. This is called as match lock हला बंधुकर अर्ली स्टेज का एथरे बारूद पुरेबे निया लगले फाटी बसी जेमिति बाण रे मारंदनी तनो करी गन पाउडर कैरी कर जानती एटा टिके स्लो हुए और टिके रिस्की बट दूररु थाय कि मारी परियो thus better than swords this is called as match locks हला तुमको कौन थिले पहरी थिला होची सोर्ड्समैन आ गोटे थिला बाणुआ से बाण मारंती बोली ताकू से दैट सो कॉल्ड गन आ गोटे थिला ढेंकिया ढेंकियाटा कौन ना आर्चर्स तीर मारला वाला आमे टिके डिटेल रे पसी गले इने पाइक मिलिशिया रो तीनटा थिला पहरी बाणुआ ढेंकिया हला ढेंकिया होची आर्चर्स बाणुआ होची से जो मारिवो बंधुक रे सीटा बुझला द व्हिच आई हैव शोन यू पहरी होची द सोर्ड्समैन ओरा तनो कर इने देखिया they were primarily marksmen using matchlocks matchlock तो हबनी matchlock ता होची बाणुआ एटा को जाने को पड़ी वाला they were the shield bearers माने बुझ पता जो धर के एमी जान शील्ड जो थाए
who fought with Khanda mane sword, eta probably habo. They were intelligence scouts of the Khorda king, eta habani. Non commandant level, eta habani. B will be the answer. सर आर्चरटा को कोन कहले अरे तीर मारला वाला मो ता पे आउट टर्मटा जो यूज करछा के ढेंकिया जेमिति ढेंकिया प्रहर ढेंकिया इनको लिखाई थियो बा देखलु एटी हेड लिखाई छिवा हला which of the following statement regarding the causes of Paik Rebellion, consider the following statement regarding the causes of Paik Rebellion. मु तुमको कौन को सब एक तीन का पर पड़ो एठी क्या आगे ठीक है करेक्ट ओटा ठीक भाई सेटा को कॉज कोन abolition of cowardly currency एटा हबो ए कहू न हबो yes sir yes sir यस सर introduction of salt monopoly in 1804 एटा भी हबो राइट salt law ये जे resumption of rent free land by the British एटा हबो हला all the three किला रोरुंग स्टेट कार सर बक्सी थर्ड जगबंधु पॉइंट हां सर थर्ड पॉइंट अरे अरे रेंट फ्री लैंड थिला कार पाइक मानकर नहीं गला सी या नहीं तुमको दिया हबनी ताल तो पाइक मान उठिबे ना यस अरे बक्सी जगबंधुकर किला रोरुंग थिला एंड फोर परगनास थिला मेजर लेक्चर आसला तापर कौन कला रिफॉर्म कला कहला देखो तुमको जो रेंट फ्री लैंड माने तुम जो देई कि ना तुमको किंग तुमको तते ने कौन कहितले पाइकस और सोल्जर मानू सब बेले सैलरी देई हबनी तणु करे किंग ताकू लैंड देई दिए पीस टाइम रे से माने एग्रीकल्चर करन वार टाइम रे से माने कि वार लड़न तणु करी लैंडेड स्टेट थाए का पाखरे ना सोल्जर क्लास को पाखरे ओडिसा रे खाली नो सब आडे ताकर जदी आउ सेटल टाइम छाड़े एबे भी गाँ मान करे जहाँ पाखे जिते लैंड अच्छी से सेते पावरफुल तार सेते बेसी प्रेस्टीज तार 100 एकड़ जमी अच्छी बुझेला और बुझे कौन कहली मु एतिक बुझेला yes sir ये जो रेंट फ्री जो से टैक्स दो नथला किंग को सेटा को उठे देला ब्रिटिश तो कहला ना 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 तुम टैक्स दबा को पड़िबो that was rather the main cause of this revolt किला रोरुंग मन पड़लाटी किला रोरुंग was the ancestral property of Bakshi Jagabandhu was located in which modern day district Khorda ou Khorda सहज क्वेश्चन era which who was the British officer that led to the detachment to eta hegla specific detachment to Banapuru in initial days of the rebellion but was forced to retreat to Cuttack eta का मैं स्पेसिफिकली पढ़ी ने जोरा पढ़ी ना मैं कोठ मन रखिया ना एमसीक्यू रु बी प्रैक्टिकल सब दिन हम पढ़ी पारिया नि बहिरु किबा नोट्स किबा क्लास रे हम एटा को एठी मन रखिया क्रिकेट एटा कहला बेलू मोर मिस हेछि कारण बाणपुर को हम स्पेसिफिकली पढ़लेनी बुझला जदि न पढ़ले ताले हम पढ़िया कोठ ना एउठ अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हम क्वेश्चन रू अरे याको मन रखिया फैक्चुअल क्वेश्चन वी कैन नॉट हेल्प इन दिस एटा कोन ना लीडर कर ना गोटे पटे अछि गोटे को एरिया मन रखी जीव चुपचाप एटा को माधव चंद्र राउतराय हबो तापंग इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन ना just check this out no need to explain and time waste over here Paik Rebellion is often described as a big restorationist movement
माने तू कोटे रीस्टोर कर स्टोर करछु तू रीस्टोर माने स्टोर हेकी थिला तू पुन थर स्टोर करछु ता माने छि रीस्टोर स्टोर रीस्टोर विजन रिविजन मु ताकू रिविजन करछु थरे पाठ पढला परे विजन करिकी देखि सारला परे रिविजन करिवु ना आ गोटे जिनस स्टोर करछु तो पुन थर ताकू रिस्टोर कलु माने गोटे स्टोर करथुलु कि काढ देला ताकू तू ताकू पुन थरे रिस्टोर करछु हला पाइक रिबेलियन टाकू रिस्टोरेनिस्ट मूवमेंट को आउछ कि को जिसको इम्प्लॉय करूची रिस्टोरेशन ऑफ मराठा रूल इन इंडिया ना नो सर सेठी ब्रिटिश पळे आसिलानी कथा छाड़ दियो रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल काउरी सिस्टम ना सेटा भी नो रिस्टोरेशन ऑफ डिथ्रोन्ड किंग ऑफ खोर्दा टू हिज फॉर्मर स्टेटस एटा हबार चांसेस बहुत अछि आगो डीटा देखिया रिस्टोरेशन ऑफ मुगल सुबेदार सिस्टम एटा भी नो सी इज द आंसर मुगल कथा तो भूली जाओ कारण मुगल जाइकी मराठा जाइकी ब्रिटिश आसिकी बसछि न तम घर भीतर मुगल तो भूल जा काउडी सिस्टम तो नुह काउडी सिस्टम जो तुम तो होची सफरिंग होची सिका सिस्टम आसी सेटा भी नुह आ कोन आइची ना खोर्दा किंग कारण खोर्दा किंग रो कमांडर थिला के बक्सी जगबंधु हेंस ताकू रिस्टोर करियार थिला राइट तेणु करी याकू रिस्टोरनेस्ट मूवमेंट बोली कहआ जाए which of the following tribal groups provided the spark following tribal group हमें just करके आसिले provide the spark for the rebellion by attacking the British police station at Banapur मैंने just तुमको करके आसी कौंदस कौंस of गुमसार गंजाम रो लिखा है संथलटा बेंगल संथल्स ऑफ मयूरभंज अच्छा अच्छा संथल्स मयूरभंज रे भी अछंती हमर लोकरा हला मु त मने को कहि के आछि एटा होतला कोठी कॉन्स ऑफ गुमसार गंजाम रो जस्ट हमें पढ़ी गसु बन पड़ला कि कॉन्स ऑफ गंजाम पाइक से पसवे दଳ बेहरा को सहित जाय कि मिसिबे बुझेला Yes, sir. ब्रिटिश इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सनसेट लॉ मुने बहुत बुझे जिया परे कंट्रीब्यूटेड टू द पाइक रिबेलियन स्टेटमेंट ठीक अछि हला it led to transfer of Odia estate to absentee Bengali landholders ठीक अछि both A and are true R is the correct explanation of A आठटारे कहार डाउट अछि No, sir. कौन आइला क्वेश्चन 1818 British appointed special commission okay to investigate the cause of the rebellion तुम कौन कहथिली जोड़े मेंबर आस्थिले कमिशन रे हला विलियम ईवर थिला तार कमिश्नर किछि किछि बही लिखिबो गोटे बही लिखिबो विलियम ईवर किछि कोई किछि बही लिखछि वेटर ईवर आउ जोड़ा का बही लिखला वाला होचंती महान महान लोक तेणु करी मोर जेतु एते स्टैचर नहीं मु तुम खाली क्लास रे जणी दउछि किछि बही लिखुछि जोड़ा का किंतु लिखुचंती ईवर बोली हला जणे लिखुछि विलियम ईवर जणे लिखुछि वेटर ईवर मते लागुछि विलियम इथो बोली बट मोर जेतु एते स्टैचर नहीं एडो बड़ बड़ राइटर को काउंटर करिवा मु खाली तुमको जोड़ा का जिंस क्लास रे जणे दउछि बुझला बट आंसर इज ईवर ओनली जोठी तुमको ईवर देखा जीवो तमे ताको मारी के आसीओ नाउ प्लीज डू नॉट आस्क मी विलियम ईवर वेटर ईवर जदी जोड़ा का लिखाई थिवो सेंद लिखाई नथिवो जस्ट चेक आउट अबाउट द ईवर तो देखियो मारी के आसीओ बुझला आई एम जस्ट लेटिंग यू व्हाट बुक्स आर हैव रिटन व्हाट वाज द फेट ऑफ राजा मुकुंद देव after the rebellion was suppressed in 1817 ताको ने की पूरी देवा रखिले he was kept under house arrest at Puri house arrest jail no at Puri he died in November 1817 ठीक है November 1817
which Odia personality is known as Gajapati Bakshi Jagabandhu during the rebellion? Bakshi Jagabandhu. British official Edward Impe, Kaithil Tatai Naik, magistrate of Kataka, held which post during the outbreak of the rebellion? Katakai, magistrate of Kataka. Yako manno ki bala? Impe is a must. Impe Irve, Major Fletcher, माने तीनटा का ना होची minimum. Which of the following was the military consequences हला outcome कहले से सबले एमती गोल बुलेबु क्वेश्चन टाको निजे बुझिउ outcome consequences of the Paik Rebellion 1817 को जा formation of the Odisha rifles that scope नहीं छाड़ दे recruitment of Paiks into the British Royal Army एटा भी है appointment of Paik general in British forces मतलब दूर दूर जाके नो permanent disbanding of the Paik militia सी कहि थिबो जो हमरो पसिबल commission report अनुसार से कहबो one of the most ferocious tribal war group याको कहउची हला कोन tribal war group are the Paiks of Eastern India. One of the most ferocious tribal war group commission कहउची तार report रे are the Paiks किंतु सेमाने ताको geography रे invincible से गुरिल्ला warfare रे best किंतु पूर्ण थर कमिशन कहउची कोन ना हमें एटा को रखी कालीर क्लास मन पका लास्ट क्लास गरजत स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स एटा रखची सी तार करिया पई का पई ना ट्रेड एंड कॉमर्स करिया पई स्टेट ता एटी प्रिंसली स्टेट बसची पाइक मानकर वारफेयर स्टाइल ता प्रोबेबली बोध हुए ब्रिटिश रो मॉडर्न वारफेयर स्टाइल सहित मिसुनी तेणु करी याकू जदी हमें ट्रेनिंग देई परिया ताहले आर्मी रे नहीं हबो किंबा से मॉडर्न वारफेयर आर्मी पाई कि एबे पाई कि तो कैपेबल नुह सेमानकर स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी अनकंपेरेबल किंतु बुझला Yes, sir. तेणु कर तांको आर्मी रे नहीं पारियानी तांको एमिति छाड़ी भी पारियानी तेणु कर तांको डिसबैंड कर दवा डिसबैंड ऑफ द पाइक मिलिशिया तांको पावरलेस करी बसे अजी कमीशन रिपोर्ट बक्सी जगबंधु सरेंडर्ड इन 1825 बिफोर व्हिच ऑफिसर एटा को मन रखिबला वाज मोहम्मद ताना कड़ा वाला वाज मोहम्मद ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश which religious center become the focal point मुकमु इन क्लास रे बुझौतली focal point of the rebellion in April 1817 समस्त जाइथिले पुरी जगन्नाथ कल्चर मु तमको एने बुझौतली ओडिया मानकर कल्चरल सेंटिमेंट को सैटिस्फाई करिया पई कि मुक्तिनाथ देवंकर पुओ रामचंद्र देवंको सी पुरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रे बसैथिले 24000 टका भी देले तांको वर्ष को से पुणी सेते बेले बुझला बिकॉज़ जगन्नाथ इज अ सेंटिमेंट सोल and the emotion of Odia people, and it is also and it should be also. During the rebellion, rebels successfully cut off the communication between Cuttack, Dekh, Bhuj, and which other major presidency? Which other major presidency? Bengal presidency, Madras presidency, Bombay presidency. एटा होची बेंगल प्रेसिडेंसी बॉर्डर एपटे भाई बॉम्बे एठी तो कटी कटी एठी कटिबो ना कारण गंजाम रे हेची भी कोन रिवोल्ट बुझेला लॉजिक भी जदी लगेबू देन इट हैज टू बी मद्रास प्रेसिडेंसी एठी पंजाब एठी एटा बेंगल पुनी बॉर्डरटा मद्रासटा पुनी बॉर्डरटा ता भीतर तेलुगु भी आसुची बेंगल रो एंड को आसुची तेलुगु मद्रास स्टार्टिंग रो आसुची तेलुगु लॉजिक लगेले भी तू आखि बंद करी मारी परु मद्रास successfully cut off the communication between Cuttack and which other major presidency? It has to be Madras. Madras. Who wrote the famous historical account Paik Bidroha? It's the most important question that highlights the heroism of Bakshi Jagabandhu, Pandit Birakishore Das.
Remember this, huh? Which of the following administrative changes occurred after the rebellion? Ette bujhaichi mu ena tamuku. Odisha was separated from Bengal presidency by 1936. बहुत डेरी अछि ए नहीं सेटा हला बहुत काला अछि एने कोड हे जो एने से salt was made tax free in Odisha, was made affordable commage tax. Dowry system was restored na no. Post of commissioner of Cuttack was strengthened. और को तो पढ़ियो कारण से अफगान हो कि से मुगल हो कि से ब्रिटिश हो कि से मराठा हो मराठा मझिरे हला समस्ते ओडिशा कोस्ट किंबा ओडिशा को रूल करचंती कटक समस्त रूल करचंती कोठु ना कटक तेणु करी कटक शहर आजिका डेट रे ओडिशा रो सबुटु कॉस्मोपॉलिटन आज माने भुवनेश्वर कैपिटल हला पर भी आज इक्विवेलेंट टू भुवनेश्वर संगरे कटक होची कॉस्मोपॉलिटन because of this historical factors. Cultural tolerance maximum होची कटक रे काहे ना बहुत लोक बहुत टाइप लोक आसी एठी रूल कले तेणु करी कल्चरल टॉलरेंस भुवनेश्वर टू बेसिक टॉलरेंस होची कोठी ना कटक रे अनफॉर्चूनेटली एबोटे राइट्स हे गला ता आगु तो सेमति किछि नथिला गेला दौला बेहरा इन द खोर्दा मिलिटरी सिस्टम was responsible for it be of leading local group of Paiks at the village level. It's a factual question. Last question. The Paik Rebellion is categorized as purely tribal movement. अरे हवन एटा बहुत लोग थिला भीतर peasant insurgency तान ना ही पाइक it's not only peasant religious crusade एटा भी हवनी an early anti-colonial armed uprising involving militia, tribes and peasants. Man. Doubt rehila? No, sir. We're done with Paiks. Hopefully, see, it is not only about reading the slides. It is about knowing the facts, then doing MCQs. गुडा जिनस लिखाई ना कौन लिखाई you should be knowing. So it is not only about जेति की तुमको इन मु क्लास रे बुझेली that is much more than enough. आउ ताठु बेसी किछि बुझियार भी नहीं. बुझला? So next class, yes. Probably we could be dealing with, not very sure, we're dealing with the Bhakti movement, one of the most significant thing to understand. At least is you classes tamar chalche ne bujhai da tamu goda jinso. Bhakti movement is hopefully next, or else we might go for the Kalinga War also. We'll see in the next class. Yeah. Any doubt you can ask, or else you'll get the PDF.